Okay, so we have started with natural language processing and we have discussed different techniques under this natural language processing. Also, we have seen the pipeline of natural language processing. Inside that, we have seen how to tokenize our data in terms of some sentences or in terms of some words using sentence tokenization and words tokenization functions. Also, we have seen what are the stop words, how to remove such stop words and stop keywords. Every language, every natural language will have some stop keywords, and how to filter those words from our data, that also we have seen. Also, we have seen how we can remove any punctuation marks. For that, the regular expression library we have used, and we were only passing small a to z and capital A to Z. Rest of the data was completely filtered out. And also, we have seen how to perform stemming and lemmatization. Now, what is stemming? Stemming is all about converting a word to its root form. For example, finally will become final. And the lemmatization process also does the same job, but in case of lemmatization, we will get some meaningful uh, output. But in case of stemming, sometimes we may not get a meaningful word after converting it to its root form. So that was stemming and lemmatization. After that, our data is ready, and now it is ready to face the machine learning algorithms. But in order to face the machine learning algorithms, text is not suitable. So we must convert that text in terms of some numerical vectors, and that was done using two different techniques. Number one, bag of words, and number two, TF-IDF method. And we have seen some disadvantages of bag of words and how that can be overcome in TF-IDF method. And in the previous practical, we have converted our data to some numerical vectors. And now our data is ready to face the machine learning algorithms, and now we can actually solve a real world problem statement using NLP. Now we are in the position to face real world problem using NLP algorithms. Now for today's session we will be considering SMS spam filtering algorithm, and for that purpose or that particular project we are going to consider. So in the previous practicals, like while discussing KNN classifier, SVM classifier, we have considered a small mini project over there. And similarly, in this particular topic, we'll be handling one project called SMS spam filtering, or that can be classification of SMS based on the data set, and that data set will train. Now, definitely, in order to train the data, we can use the machine learning algorithms, and so many machine learning algorithms we can discuss over here. So that can be a classification, because this is going to be a classification problem. So we are going to use the classification algorithms. Now what can be the classification algorithms? The classification algorithms can be the SVM classifier, can be support vector classifier, or even any other KNN classifier, and even logistic regression. But as we have already studied, for the textual data, naive based classifier is quite suitable. So we'll be considering that classifier in detail in today's session. Okay, so basically we are going to use, or we are going to utilize the naive based classifier, so that we'll be getting the correct outcome, or that could generate the better result. So in order to have this project implemented, number one thing that we are going to consider, that's the data set which is available with us. So now I will be showing this data set. So this is the data set that we are having. This, you can see here, the first column is some labels like spam and ham kind of label. So that means this SMS is a spam SMS. This is not the spam SMS. So we are having different SMS, and we are actually classifying them whether it is spam SMS or not the spam SMS. So this is the text file, and this is having so many entries. Now, as far as these entries are concerned, there are more than 5,000 entries. So if this is considered, it is having roughly more than 5,000 number of entries in this particular data set. And this data set we are going to consider in today's practical. Okay, so that will be a SMS spam classification.
and that will be a very interesting practical that we are going to cover up over here. And for this purpose, we'll be using this complete data set, and this data set, as you can see over here, this is having number of entries. More than 5,000 number of entries are there. Now this we are going to load in our Python environment, and now definitely in the previous case also, in the last practical also, we have loaded some txt file, but that was having only one column. That means it was just having some single column, some text. But this time, as it is having the multiple columns, now the first is this label, which denotes, or this is the target variable basically, and from this data we need to extract some sort of features. So this is going to be a target variable. So whatever you will see over here, the first column, that's going to be a target variable, and definitely the second column will be the features or the input or the predictors. That's what we can call it as. So now it's time to load this thing in our Python environment, and once it is loaded, we can definitely have some operations on it. Okay, so I'll close this file, and let me open the Python environment, and there we can actually start with the programming. Now for that purpose, I will be creating a new file, and this I'm making by the name SMS spam detection dot py, and I'll be zooming in this area. Okay, so as usual, as you know, the fundamental step or number one step is finding or loading the libraries. So that will be our step number one. So we'll be loading all those such libraries. So that will be step number one, and this is importing the packages that we need. And as you know, the number one package that is very much important is the NLTK. So import NLTK. That's what we are going to write over here. Number two, as you know, we need some sort of stemming also, and we are also focused on removing the stop word. So first of all, let's focus on the stop word. So that is from the NLTK dot purpose import stop keywords. Okay, so not stop underscore words, it should be stop words. Where it is the library changed? Okay, it will be stop words only. Okay, I think I have made a mistake here. That's the problem. From, it should be from NLTK purpose, and now it should show me the uh, correct suggestion. Okay, now it's showing the correct suggestion. Okay, so NLTK dot corpus import stop words, and the next important library is for the stemming operation. So from NLTK dot stem import word net lematizer. Okay, so this is the library that we will be using to lematize our data. Sometimes we may use the porter stemmer also. So if you are focusing on stemming kind of thing, then definitely you can go with the stemming operation, but this time we'll be doing the lemmatization. So definitely it will take some time, but let it be. So now, as we have loaded the libraries, now the number two step is loading the data set. So here step number two, and this will be importing the data set. And data set I just have shown to you, that's the data set that we're going to import. And now after loading that data, now in order to load that data, previously we have used the file handling functions, but this time I will be using pandas library. So import pandas as PD. And previously we have seen how the pandas library can be used to load the CSV files. So this time we'll be discussing same pandas library to the use of it for loading the text files. So messages equal to PD dot
read underscore CSV. Okay, so the same function I'm going to use, but this time as there could be some different thing. This is the txt file, so some modifications I will have to do in writing this name of this file or in this particular function. So the file path I need to provide. So it's SMS spam collection dot txt. That's my file. But here I need to provide as it's to be a CSV file. I should It's not the CSV file, so I should be considering some what kind of the separator is there in case of comma separated values, or in case of CSV file there is comma which separates two different fields. But here it is no comma in our data set. There is no comma as it is text file. It's not the CSV file, so it's not the comma. So what kind of separator I'm going to use? So separator equals to, let's say, slash t. Okay. So that's the separator I am going to use, because that will be the thing which is going to separate two different columns. And as this is not the CSV file, so definitely the headers, the columns are not having any kind of headers. So that headers I'll be giving using this names. So names equals to, and then I should give two names. Now first will be my label, that is nothing but spam or not spam kind of thing. And second is message. Now this is user defined label. Okay, so the problem with this file is that in order to load it as a CSV or pd.read CSV function, this file is not the CSV file. That's the problem number one. This is .txt file. And as it is not .csv file, in case of CSV file, if you have seen CSV files previously, every CSV file will have some comma after every entry. It will be having some comma. So let's say spam comma, like that. And also it is having some columns. Now the first column that headers to the column, so that can be the label or the message. But unfortunately this file, this SMS, this is not mentioning anything, or it's not having the column headers also. And again there is no comma separated value, so this is just having some tab space or some space. So that's the problem with this file. And in order to load it as a CSV file, or in order to convert it as a pandas data frame, so I'll be using a separator. Slash t is the separator instead of comma, and the names are label and message. So I'll assign manual names to their column so that it will be a pandas data frame. So now the messages is the pandas data frame. And if you print this messages dot head, so it will be printing first five entries from this, and you can see how the pandas data frame can be done. Now here you can see here, now the label is assigned, that is user defined name, right? And the message is the again user defined name. And this is 1 2 3 4, that's the index for the pandas data frame. And this is harm, this is spam, this kind of thing. So this kind of email, or the SMS is the spam SMS. This is not the spam, this is the spam kind of SMS. So this is how the it can be converted to pandas data frame. So now after this, I am no longer interested in printing this data frame, and now I can go forward. Now one more thing that I should load over here as a library, that's the RE library. So import RE, and this library, that's the regular expression library. This library will be used to filter the punctuation marks from our data. Now you can see here in our data we are getting too many punctuations and dot dot kind of things, so that can be easily filtered by using this library. So that's how the dataset loading is done. And now comes the next step, that is nothing but filtering the stop words plus the punctuations plus the lemmatization process. So that will be our step number 3. That will be firstly removal of stop words, and of course plus the lemmatization. What this is what we are going to operate. Now in order to do this, I should create an object called lemmatizer
equals to this word limitizer. That's how the object will be. And of course, I should create some variable in which I will be getting the SMS. So SMS I will be taking as an empty list. So I'll get the list of all the SMS. And now I should apply the for loop. So here, as you know that this is the pandas data frame on which we are going to operate. So let's take an I as a variable. For I in range, and then of course I should be right here, let's say 0 comma length of messages. Okay, you can even write length of messages, that's also fine, but I'm writing like 0 comma length of message. So I will start always, I am ensuring that I will always start from the 0, and that will be, it will end up with the length of messages. Now the length of this messages is nothing but this complete list, which is having this label plus this message. So that's the thing, but we need to operate on this message only. We are not bothered about this label column, so that we are going to uh, extract. Now let's do this. We'll be doing this very efficiently. So here, the first of all, the first message is there. So message equals to re dot sub, or instead of message I'll take a sentence as an variable. Sentence equals to this re dot sub, and as you know, this is used to remove the punctuation marks. So, and for that, you know, I should be giving this small a to z and capital A to z. These things will be passed, and the rest things will be ignored. And what can be the replacement for that? So simple space will be the replacement for that. And on what you need to operate. So messages, okay, this thing we need to operate. But from this, the messages is nothing but entire thing, this label plus message. But I don't need everything, I need messages of only message column. तो ये पूरा मैसेज कॉलम मिल जाएगा, लेकिन उसमें का भी सिर्फ फर्स्ट मैसेज. गॉट इट? नाउ दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग. तो मुझे ये सारा मैसेज कॉलम नहीं चाहिए, ये पूरा मैसेजेस का कॉलम नहीं चाहिए. ये मैसेजेस मतलब लेबल प्लस दिस मैसेज, एंटायर डेटा फ्रेम, बिकॉज दिस इज द डेटा फ्रेम. मैसेजेस मतलब क्या है, दिस में से पूरा हमने यहाँ पे लोड कर लिया है, ये पूरा मतलब मैसेजेस है. देन मैसेजेस का मैसेज कॉलम, क्योंकि मैसेज कॉलम हमने क्या किया है, एक कॉलम लेबल है, एक कॉलम मैसेज है. तो अपना जो डेटा फ्रेम है इसके अंदर एक कॉलम लेबल है एंड एक कॉलम मैसेज है. तो इसमें का मैसेज, तो मतलब ये पूरा, फिर भी ये पूरा कॉलम हो गया, लेकिन पूरा कॉलम नहीं चाहिए, सिर्फ फर्स्ट दिस वन, एक के बाद एक हम प्रोसेस करने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू प्रोसेस वन आफ्टर द अनदर, ओनली दैट. सो दैट्स हाउ another index I, so that will be the only the first value or the first SMS. So I'll be getting the sentence which will be the first SMS, right? Now हम क्या करेंगे, हमने तो यहां से अभी पंक्चुएशन मार्क्स रिमूव कर लिए. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सेंटेंस इक्वल्स टू सेंटेंस डॉट लोअर. सो ये लोअर केस में हो जाएगा जो कुछ भी है, तो लास्ट टाइम हमने ये किया है. फिर हम उसको स्प्लिट करेंगे, वर्ड्स बनाएंगे. सेंटेंस इक्वल्स टू दिस सेंटेंस dot split, right? Now doing this split operation, sorry, the spelling is incorrect over here. So doing this split operation, by doing this split operation, what I'll be getting, I'll be getting the list of words only. Okay, so after doing this split operation, I'll be getting the list of words instead of getting the list of sentences. And for each and every word now, I can apply the lemmatization process. Now in order to do the lemmatization, so here I'll be getting the words after doing the lemmatization. So here lemmatizer dot lemmatize, and definitely the word will be there. For word in, किसके अंदर वो word होना चाहिए, definitely sentence के अंदर. If the word not
in. Okay, if the word not in set, कौन सा set? अपना stop words का set. Stop words dot words, और कौन से words होने चाहिए? English, English language के words, right? And now this is complete. Okay, so this is how it will be filtered, and finally I will be getting the list of words. Okay, so let's hit enter. So I'll be getting the list of words over here that will be lemmatized. And now these words, using these words, I need to create a string. Now that will be sentence equals to this join, as that of previous only words. So यहाँ पे हमें जो मिलेगा that will be a words list, and if we join these things together, that will be the sentence. That's what I will be creating here. That will be a sentence, that will be a string basically. And in order to convert that into a list of uh, the SMS, I will append that in SMS dot append, and of course I'll be passing this sentence. So now this will become the list of messages which are very much properly filtered. And if you want to print all these stuff over here, so SMS you can print, and definitely we'll be getting all the list of SMS that in our data set. So after running this, it will definitely take some time. And again here there is some error. Error is this one: the message is not defined. It says the message is not defined because this message has to be in string format. Okay, I'm taking it as the normal one, but as it is the column header, so it should be in string format. And now I can try running this, and let will check where if there are some any other queries. So it will take some time because it has to lematize not just a single word. It will have to lematize around 5,000 plus SMS, and every SMS will be having more than let's say 10, 15 words. So after that, it will generate the result. So it will take some time definitely. Now it has taken its time, and it has printed this list. You see here the square bracket at the end, so that means this is the list of sentences or the list of SMS or the messages we are getting. And this list is very long. This is around having 5,000 plus number of SMS. So this is very decent data set that we are having currently. Now we are having the filtered version filtered version of our SMS, and every SMS is now the stop words free, and also the punctuations are removed from the SMS. Now we are ready. This data is ready to face the bag of word method, or you may create TF IDF also. So I'll be showing the bag of word approach, and you may try this thing with TF IDF also, and you will verify the results, whether you are getting better results using TF IDF or the bag of word, that you can comment. And now for the classification purpose also, now I will be using naive based classifier in today's practical, but you may be considering k-NIN classifier, random forest classifier, decision tree classifier. So we have seen number of classification algorithm, around 7 to 8 number of classification algorithm. You can definitely go with all such algorithms, and you can try each and every algorithm on this data, and you can comment on the results which algorithms are better for this kind of textual processing. So as we are previously knowing that the naive based classifier, which works on the probability based thing, so that's very much better for the textual data. So that's how we are actually focusing on it. So now for that purpose, in order to operate that, we need to create a bag of words. So that will be our step number next. So that will be step number 4, and that is bag of words. You may consider TF IDF also. I'm talking about bag of word, and in order to have a bag of word, we need to take help of this library sklearn dot feature extraction library dot text import
Okay, so now we need to import something, and here the count vectorizer. So let me check whether it gives me some. It's not giving me suggestion. So count vectorizer. Okay, now it's giving the suggestion count vectorizer. Okay, so that is the thing that, or the class or the function that will be used to create the bag of words. Now after hitting enter, I will be creating count vectorizer cv equals to this count vectorizer. Okay, and we need to pass the max number of features, and this time, as our SMS can have number of words, so let's consider features as 2500. That means maximum 2500 words can be there in one single SMS. So that will be a very rare case. Okay, so the SMS, if it is single page long, it's around having 160 number of characters, and it can be having, if there are 160 number of characters, so definitely the words are very less. The words can be around 40-50 number of words can be there. But now I'm considering very rare scenario, whether in that SMS, that SMS is having 2500 number of words. Okay, but definitely this is going to be very lengthy, but still we'll be considering this thing. The SMS, we are considering the SMS having 2500 number of words. That can be the features. And now I'll be creating the independent variables x, or the predictor variables, and that I will create using cv dot fit transform. And I need to, of course, need to pass this, and that will be SMS. Okay, what I need to pass? SMS. And finally I should convert it to array, as this will be just not an array. So by converting to array, so it will be a to array kind of thing, and here I'll be getting the x as a array. So the matrix representation of our data, that's what I'll be getting at the end of this thing. Now after hitting enter over here, now I can if you want, you can print this x, and if you want, you can go further, or let's print this x so that we'll get what exactly, or we'll see what exactly we're getting. So after running this, definitely it is going to take some time, because it will have to process the entire data, and to generate the SMS list, and after that the count vectorizer will operate on it, and after that we will get the x, which will be quite large data. So it will definitely take some time, as our data set is very huge. Now this is how the x we are getting. You will see that everything is 0 0, not like that. It will be having some values, but this row is having, sorry, this row is actually having, this particular row is actually having 2500 number of entries. So it's only showing first three and last three, and middle are dot dot dot. And even this column is actually having 5000 plus number of rows, but again there is only first three and last three, and middle one is dot dot dot. Okay, so that's the thing. So this is the independent variables, that means the features we were talking about. Now next important thing is, what about the output column or the target variable? So otherwise I'll be putting here some comment. So this will be the independent, or the predictors or features. That's what we have extracted. Now that's the x, and the y will be all about the target variable. Now the target variable is y, and as you know, that variable is the column label from our messages. But the column label unfortunately contains the text. It is not having the numeric data. Now in order to convert that to into numeric data, there we have seen how to convert categorical variables in some numbers, and for that purpose we have seen the label encoders, and sometimes one hot encoder can also be used, and that we have seen in the previous practicals how to use the label encoder. But there is one more trick that you can actually do, and that is the trick from the pandas library. So pandas library pd is actually having a function called
get underscore dummies. And this actually converts any label data or any categorical data into some numbers. So if in order to see this, let's say messages, okay? So from the messages, I need a label column, right? This column I need. Now this will be the y. If you print y, you will see the instead of labels, we will be getting something different. Let's run this, and now we'll see what we will get after printing this y. Now, of course, this will be a pandas data frame. Y will be a pandas data frame because as we are using the PD library, and from that we are interested in some column. So we'll be extracting some column from that definitely using iloc function or ilocation function, and that can be used. Now see here, our data set is actually having this 5571 number of entries, and after converting this y to dummies, actually label to dummies, I'm getting two columns. Okay, now that's the interesting thing. Instead of getting single column, I'm getting two columns because I was having the spam and ham kind of variables only single column. But for that single column, this label is a single column. For that, this is the first column is index, that is 5000 something, you're saying that's the index. But the second and this third column is actually converted from that label. The spam is converted into two values. Similarly, the harm is converted into two values. Now if you clearly see, wherever here is 1, second column will have 0. Here it is 1, the second column will have 0. Here it is 0, so second column will have 1. So basically what, let's see this thing. If I scroll it, or I will make it quite large. Yeah, now you can see over here. So first 5 and last 5 is now printed. Now this is the harm and spam. So whenever the SMS is harm, this harm variable will be equal to 1 and the spam will be equal to 0. And wherever the SMS is spam, the spam will be equal to 1 and harm will be equal to 0. Now this is very interesting thing. So actually we don't need each and everything, this and the two columns. Why? Because wherever it is 0, I will say that is harm, and wherever that is 1, I will say it is spam. So I can consider only one column also, and that can also be used to classify. क्योंकि यहाँ पे दो कॉलम की अभी हमें जरूरत है नहीं. दो इट हैज बीन द टू कॉलम्स, यहाँ पे प्रिडिक्टर वेरिएबल दो कॉलम की तरह इस तरह से है, लेकिन हमें दो कॉलम की डेफिनेटली नीड है नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो मतलब अगर मैं हार्म बोलूं और वन मतलब स्पैम बोलूं तो चल जाएगा. वन जीरो की कोई जरूरत नहीं ना, तो वन जीरो मतलब हार्म, देन दिस वन जीरो मतलब हार्म, एंड जीरो वन मतलब स्पैम. इंस्टेड ऑफ दैट जीरो मतलब हार्म एंड वन मतलब स्पैम. दैट्स व्हाट आई कैन डू. तो ये स्पैम अगर होगा तो वन आएगा आउटपुट, अगर जो स्पैम नहीं है तो इट्स आउटपुट विल बी जीरो. तो व्हाट आई विल डू, फ्रॉम दिस डेटा फ्रेम आई विल बी एक्सट्रैक्टिंग ओनली वन वेरिएबल. तो एक ही वेरिएबल हम इसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड दैट विल बी आवर y. सो y इक्वल टू this y dot I location, and I need all rows but I need column 1, and of course dot values. तो ये हमने previously देखा है. तो ये जो 1 है ना, that represent the column number. If I take 0, that means I will be taking the first column, and if I take 1, that means I will be taking second column. Now if I am taking second column, that means 0 मतलब not spam and 1 मतलब spam in that particular column. अगर मैं first column लूंगा तो 1 मतलब spam and 0 मतलब not, सॉरी 1 मतलब harm होगा in that case and 0 मतलब spam होगा in that case. उल्टा होगा क्योंकि यहाँ पे उल्टा है और यहाँ पे उल्टा है. So now if you print this, now we will be getting only one column. So if I print the y over here, now you can see completely different results we will be getting. And here I will be getting only one column because हमने यहाँ से एक column ही extract किया है. तो हमें अभी x मिल चुका है और अब हमें y मिलेगा.
नो एक्स मतलब हमारे जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसे हम एक्स बोलते हैं, तो वो हमें मिल चुका है और हम वेट कर रहे हैं वाई की। तो यहाँ पे ये सब प्रोसेस होके थोड़ी देर में y मिलेगा, तो ये y हमें मिल चुका है। दिस इज अवर y। तो जीरो मतलब हार्म, अगेन दिस इज हार्म, दिस इज अगेन स्पैम, वन मतलब स्पैम। तो ये हमारा y है जिसकी लेंथ है 5000 समथिंग, 5570 कुछ तो था, 71। तो उतने नंबर ऑफ वैल्यूज है इसके अंदर। जीरो रिप्रेजेंट करता है कि वो एसएमएस स्पैम नहीं है, एंड वन रिप्रेजेंट करता है वो एसएमएस स्पैम है। तो मेरा जो डेटाबेस है दिस वन, इसके अंदर जहां पे भी हार्म मिला, फर्स्ट एंट्री इज हार्म तो यहाँ पे जीरो आया है, सेकेंड एंट्री इज हार्म तो यहाँ पे फिर से जीरो है, थर्ड एंट्री स्पैम है तो यहाँ पे मुझे वन मिला है, राइट। तो ये जो पूरा कॉलम है हैम हैम स्पैम पैम करके, इसको मैंने जीरोज और वंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ ये भी मुझे नंबर्स के फॉर्म में एक वेक्टर या फिर एक मैट्रिक्स आप बोल सकते हो या फिर एक एरे मिला। और ये जो आगे का था पूरा एसएमएस, इसको हमने क्या किया, पहले तो हमने इसको इसमें से स्टॉप वर्ड्स हटाए, फिर हमने उसमें से पंक्चुएशन मार्क्स हटाए, फिर हमने उसको लेमेटाइज किया, और फाइनली हमें उसका एक लिस्ट बना। तो हमने उसको भी हमने बैग ऑफ वर्ड्स किया। बैग ऑफ वर्ड्स करके मुझे एक बड़ा मैट्रिक्स मिला जिसके अंदर जीरोज वन जीरो वन जीरो वन जीरो काइंड ऑफ टर्म्स मुझे थी। तो मुझे ये भी न्यूमरिक हो गया, एंड दिस इज ऑल्सो नाउ न्यूमरिक। तो जो टोटल टेक्स्ट था अपना वो नंबर्स के फॉर्म में आ चुका है, और जो प्रेडिक्टर वेरिएबल्स है या फिर जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, वो सारे वेरिएबल्स मुझे एक्स के अंदर मिल चुके हैं, और बाकी का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज नाउ इन y। so now this is bag of words, or I can say plus extracting the predictors and target variables। तो यहाँ तक तो हम आ चुके हैं, और यहाँ से आगे चालू होगा अपना मशीन लर्निंग का काम। तो हमने यहाँ तक तो देखा था कि ये तो हमारा इनिशियल डेटा प्रिपरेशन है, तो इसके लिए हमने एनएलपी टेक्निक्स यूज किए। नाउ यहाँ पे डेटा सेट को स्प्लिट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन काइंड ऑफ वेरिएबल्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो वो सब कुछ प्रीवियस नॉलेज हमारा जो कुछ भी है वही यहाँ पे अप्लाई होगा, एंड दैट विल बी स्टेप नंबर 5, एंड दैट विल बी स्प्लिटिंग द डेटा सेट। तो डेटा सेट को स्प्लिट करेंगे। डेटा सेट को स्प्लिट करने के लिए आपको पता है कि हमें एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, एसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन। इसके अंदर से हमें इंपोर्ट करना होगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन, राइट। और फिर इससे बनेगा x अंडरस्कोर टेस्ट, सॉरी ट्रेन, then second will be x underscore test, then third will be y underscore train, and next will be y underscore test, right। तो ये सारे वेरिएबल्स हमारे यहाँ से बनेंगे, and all these variables will be further used to train the data and evaluate the performance। now equal to train test split, और पहला आर्गुमेंट होगा अपना x, सेकेंड आर्गुमेंट होगा y, ओके, राइट। सो ये x एंड y को हम यूज करेंगे फॉर द स्प्लिटिंग पर्पज। और नेक्स्ट क्या होगा अपना, यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है, टेस्ट साइज। टेस्ट साइज हम यहाँ पे यूज करेंगे लेट्स से 0.2। और नेक्स्ट क्या होता है, रैंडम स्टेट। सो रैंडम स्टेट हमारा जीरो एज यूजुअल। तो ये सब कुछ मैंने प्रीवियस अपना जो नॉलेज है उसी को यूज किया है, कुछ नया टेक्निक यहाँ पे यूज नहीं किया है, दैट्स फाइन। तो यहाँ पे अपना डेटा सेट स्प्लिट किया जाएगा इन एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट के फॉर्म में यूजिंग दिस वन। नाउ वंस द डेटा splitting is done, step number next is the training the model। so step number next is training the model। now यहाँ पे हम नेव बेस क्लासिफायर कंसिडर करेंगे। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि हम नेव बेस मॉडल को ट्रेन करने वाले हैं, and this model will be loading from the scikit-learn library as well। and इसके अंदर से हम लोड करेंगे sklearn dot navbase import multinomial nomial
नेव बेस मॉडल, ओके, एनबी। एंड नाउ फॉर दैट, इसके लिए हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे और इसको हम बोलेंगे मॉडल ऑल्सो, और लेट्स से स्पैम मॉडल, उसको मैं नाम देता हूँ स्पैम मॉडल, इससे यूजर डिफाइन नेम। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये जो फंक्शन है दिस वन यू नीड टू कॉल, एंड फाइनली इसके ऊपर हम फिट करेंगे। सो दिस विल बी अ मॉडल, एंड नाउ दिस मॉडल मस्ट बी फिटेड। सो तो यहाँ इसको फिट कर सकते हैं। नाउ दिस मॉडल कैन बी फिट यूजिंग एक्स ट्रेन एंड एक्स वाई ट्रेन डेटा। तो मैं यहाँ से यहीं पे उसको फिट कर देता हूँ, ओके। अदरवाइज यू कैन यूज वन मोर लाइन ऑफ कोड एंड स्पैम मॉडल डॉट फिट कर सकते हो, नीचे लिख सकते हो, लेकिन ये इसे इसे नेस्टिंग बोलते हैं। तो इन दिस वे आई कैन डू, सो एक्स अंडरस्कोर ट्रेन comma y underscore train, ओके। तो दिस इज हाउ यू कैन डू। तो लास्ट टाइम हम क्या करते थे कि मतलब वैसे भी कर सकते हो, नो इश्यूज। तो इसको यहाँ पे फिट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्पैम मॉडल डॉट फिट, और फिर इसके अंदर हम एक्स ट्रेन वाई ट्रेन लिखेंगे, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट ये सारा ये जो चीज़ है, एक इफ यू वांट टू डू इन अ सिंगल लाइन, आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये थोड़ा-सा आपको मतलब रीडेबल नहीं लगेगा या फिर थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आप इस तरह से कर सकते हो आपका टाइम बचाने के लिए, इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम, एंड इट विल लुक मोर प्रोफेशनल ऑल्सो, एंड थोड़ा-सा अच्छा एक्सपीरियंस आने के बाद आप इसी तरह से प्रोग्रामिंग करोगे। तो नाउ दिस विल बी फिट एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, और इसको मल्टीपल भी कर सकते हो, मल्टीपल फंक्शंस वगैरह उसको डॉट डॉट करके कर सकते हैं। दैट्स द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। नाउ द स्पैम मॉडल will be trained on X train and Y train data, which is the 80% of the our original data set. And original data set को भी हमने natural language processing use करके हमने numeric terms में लेकर आए हैं, and after that we are actually training this naive based classifier। और एक बार ये classifier train हो चुका है यहाँ पे, तो that's it। and now यहाँ पे बात आएगी इसका performance evaluate करने की, and that will be our step number 7, परफॉर्मेंस ऑफ आवर मॉडल, कि ये मॉडल आखिरकार किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, इसकी एक्यूरेसी क्या है, इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है। तो ये सारा यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो ये परफॉर्मेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि हमें एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, एसके लर्न डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स। हमें पता है कि ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमें लगेगा, और इसके साथ और एक हम यहाँ पे लोड करते हैं कि एक्यूरेसी स्कोर, एक्यूरेसी स्कोर। तो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से कंफ्यूजन मैट्रिक्स को हम इंडेक्सिंग करके उसमें का ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव्स, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड फ्रॉम दैट यूजिंग द फॉर्मूला और मैथमेटिकल इक्वेशन हमने एक्यूरेसी फाइंड आउट की। Now I'll be showing you how we can use the simple accuracy score function. तो उसके in that case we need not to perform any kind of indexing to confusion matrix, और वहाँ से true positive, true negative, false negative extract करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली उसको extract कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए हमें चाहिए होगा प्रिडिक्शन, क्योंकि जो प्रिडिक्टेड है उसके ऊपर हम एक्यूरेसी फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअल क्या था और प्रिडिक्टेड क्या था। तो ये जो स्पैम मॉडल है, दैट हैज टू प्रिडिक्ट spam model dot predict, and it has to predict, what it will predict, it has to predict on x underscore test on this data. So this is, we are going to evaluate its performance on the testing data set, which is not shown to the model, unknown data, and that will be a better way of evaluating the confusion matrix and the accuracy. So now, तो ये जो प्रिंटिंग है ना, यहाँ पे इसको आई जस्ट कमेंटेड आउट, नो लॉन्गर नीडेड टू मी। एंड नाउ यहाँ पे इसका फाइंड आउट करेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स कॉल्ड सीएम। नाउ द सीएम इक्वल टू कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें देना पड़ेगा ट्रू वैल्यू and the predicted value, okay, these two things we need to give over here. Now for that purpose the true value will be this y underscore test, that will be our true value, and the predicted value will be y underscore prediction, that will be our predicted value. This is how the confusion matrix will calculate the confusion matrix, and for the accuracy will be using
this accuracy score, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्रू वैल्यू देनी पड़ेगी। तो ट्रू वैल्यू जो है हमारी दैट इज टेस्ट, दिस वन, एंड द प्रेडिक्टेड इज दैट वन। एंड इफ यू वांट टू प्रिंट द कंफ्यूजन मैट्रिक्स, सो यू कैन प्रिंट, यहाँ पे हम लिखेंगे कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एंड इसको प्रिंट करेंगे CM। and if you want to print the accuracy of our model, so here accuracy equals to this ACC, that's the variable I'm using over here. So that will be the accuracy of our model. So that's going to be the confusion metric, that will be a CM, that's what I'm going to print, and the accuracy will be ACC. Okay, that's how I'm going to print the two different results over here. Now this is confusion matrix and the accuracy. Now we will evaluate our performance, and this is actually the test accuracy, and the confusion matrix is also for the test data set. Now let's run this and we'll find it out. What is the confusion matrix, how many true positives we are getting, how many true negatives we are getting, and what is the accuracy out of 100 we are getting for our model. And we'll wait for the result, because as it has to perform 5700 around 5000 plus uh, predictions, not exactly 5000, but it will be predicting around let's say 20% of 5000, so that will come across very much less, so it will be around 1000 predictions. But now the confusion matrix is actually saying everything, and even the accuracy is also 98.29%. That's the accuracy we are getting, 98.29%. That's very decent accuracy, and the confusion matrix is also saying the same thing. So as I said, nearly 1000 number of entries, as the test size is 20%, so nearly 1000 number of entries and the 1000 number of SMS will be considered to calculate the confusion matrix and also this accuracy. So even for the unknown data, true positives are 946 and only 9 are false positive. Okay, so that's the important thing. And here again we are getting, this is the quite interesting result, 150 is the true negative, and as far as the false negatives are concerned, only 10. So out of 100, this we can consider as a thousand plus, let's say 1100. So out of 1100 entries, you are getting only 20 incorrect results. This 10 plus this 9. So that means only roughly 20 incorrect results out of 1100. So 1080 number of correct entries we are getting. So that's the indication of this accuracy, 98.29%. So out of 100, only 2 SMS will be classified incorrectly, but 98 SMS will be classified correctly. So that's the interesting part about this classifier. So we are on the proper track. This means we are on the proper track, that the whatever classifier we have used, that is quite good for this particular project. Now the next important thing, this is the end of the model and the training and everything. But actually ये जो मॉडल ट्रेन किया है, दिस इज फॉर द रियल वर्ल्ड प्रोडिक्शन। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक हमने मॉडल बिल्ड किया, उसका एक्यूरेसी फाइंड आउट किया, टेस्टिंग डेटा पे प्रोडिक्शन भी किया। लेकिन जब भी हम कोई मशीन लर्निंग का मॉडल डेवलप करेंगे, तो हम ये उम्मीद उससे रखेंगे कि जब भी कोई रियल टाइम एसएमएस उसको आएगा, या फिर हम इनपुट करेंगे रियल टाइम एसएमएस, तो वो क्या स्पैम करके क्लासिफाई किया जाएगा, या फिर हार्म करके क्लासिफाई किया जाएगा, तो वो रियल वर्ल्ड डेटा पे उसका टेस्टिंग होना जरूरी है। सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट फेज, प्रिडिक्शन ऑन रियल टाइम डेटा। तो हम रियल टाइम इनपुट करेंगे, यहाँ पे हम यूजर को पूछेंगे कि समथिंग यू एंटर। सो यहाँ पे लेट्स आस्क द यूजर, यहाँ पे we take SMS equals to input, as this is required in the text format only. तो यहाँ पे यूजर को बोलेंगे कि enter the SMS और type
SMS एंड हम उसको यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देंगे. सो यूजर विल टाइप सम SMS. नाउ यहाँ पे मैं इंट इनपुट नहीं लिख रहा हूँ. ओके, व्हाई? बिकॉज आई नीड अ टेक्स्ट ओनली. आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन द text. I'm not worried about the this kind of integer values. In the previous case, I have used the integer, but this time I don't need integer kind of data. So only text is required. Okay, fine. तो जैसे ही मुझे SMS मिलेगा तो हम इसको टेस्ट SMS करके देते हैं नाम. ओके, दिस इज आवर टेस्ट SMS. दैट्स हाउ टेस्ट SMS. तो इसके ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? सारा NLP करना पड़ेगा. तो दिस इज आवर टेस्ट SMS. तो ये जो टेस्ट SMS है इसको हमें पहले तो करना पड़ेगा. इसका RE करके पंक्चुएशन हटाने पड़ेंगे जो भी हम पंक्चुएशन उसके अंदर देंगे. एंड दैट विल बी रिमूव्ड बाय यूजिंग दिस थिंग. सो हमारा जो प्रीवियसली A to Z है फिर कैपिटल A to Z है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज. और दिस विल बी एंड द रिप्लेसमेंट फॉर दैट विल बी यूज्ड एज स्पेस. एंड किस में से करना है? ये टेस्ट SMS के अंदर करना है ये प्रोसेस. तो ये एक चीज हो गया. दिस इज द वन थिंग दैट वी आर गोइंग टू प्रोसेस. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसको लोअर करना पड़ेगा. सो टेस्ट SMS इक्वल टू टेस्ट अंडरस्कोर SMS डॉट लोअर. राइट. सो दिस विल बी अ लोअर थिंग. ये लोअर हो गया. फिर उसको स्प्लिट भी करना पड़ेगा, वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा. SMS इक्वल्स टू दिस टेस्ट underscore SMS dot split. Right, this is the function to get it words. और फिर हम इसके ऊपर अभी लेमेटाइजर का ऑपरेट कर सकते हैं. नाउ लेमेटाइजर विल कन्वर्ट इट इनटू सम वर्ड्स. सो वर्ड्स इक्वल्स टू एंड यहाँ पे अपना है लेमेटाइजर डॉट लेमेटाइज फंक्शन. वर्ड यहाँ पे है एंड फॉर वर्ड इन इसके अंदर होना चाहिए. दैट वर्ड शुड बी इन text SMS. Okay, so that word has to be in test underscore SMS, right? In this, it should be the word. If word not in set, कौन सा set? Stop words का. Stop words dot words, and inside that English language stop words we are considering. Okay, so now this is how this is complete. And now the stop words will be removed and plus the lemmatization will be applied. But as we know, we need the SMS in the form of sentence. So it will be, we need to convert it into a join. So it will be a string join and this words we need to operate. Now फॉर लूप आप बोलोगे यहाँ पे फॉर लूप क्यों नहीं है? क्योंकि फॉर लूप अगर मल्टीपल SMS होंगे तो यहाँ पे एक ही SMS है तो फॉर लूप की जरूरत नहीं है. एक ही SMS है बस, यहाँ पे हो गया. तो यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद विल बी गेटिंग द स्ट्रिंग द डेटा इन टर्म्स ऑफ सम स्ट्रिंग. वो जो स्ट्रिंग है दैट वी कैन कंसिडर. तो यहाँ पे अगर आप ये जो टेस्ट SMS टाइप करोगे तो आपको पता ही होगा. और जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस तरह से तो यू कैन प्रिंट इट आउट एंड यू विल फाइंड कि उसका जो लेमेटाइजेशन है वो सब कुछ हो चुका है और उसका जो वर्ड है वो भी स्टॉप वर्ड्स है वो भी हटा दिए हैं. एंड उसके बाद हमें मिलेगा जो कुछ भी दैट विल बी आवर टेस्ट SMS. नाउ इन ऑर्डर टू हैव दिस और आगे चल के क्या करना पड़ेगा? ये जो टेस्ट SMS है इसका भी बैग ऑफ वर्ड निकालना पड़ेगा. सो वी नीड टू फाइंड आउट द बैग ऑफ वर्ड. बैग ऑफ वर्ड फाइंड आउट करने के लिए वी आर हैविंग अ सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म दैट इज काउंट वेक्टराइजर हमने यूज किया है. तो उसी को हम यूज करेंगे काउंट वेक्टराइजर को एंड वी विल फाइंड आउट द बैग ऑफ वर्ड. तो बैग ऑफ वर्ड फाइंड आउट करने के लिए फिर से हमें इसको टेस्ट SMS ही बोलेंगे एंड CV को हम यूज करेंगे CV डॉट. तो यहाँ पे अगर मैं फिट ट्रांसफॉर्म यूज करूंगा तो दैट विल बी अगेन ट्रेनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट हम ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे. ओके, व्हाई ट्रांसफॉर्म ओनली? क्योंकि ये जो CV है ना दैट इज ऑलरेडी ट्रेन्ड ऑन आवर डेटा सेट. तो वो जो ट्रेन हो चुका है उसी को हम यूज करने वाले हैं टू फाइंड आउट द बैग ऑफ वर्ड्स. तो उसको अब हम देंगे ये टेस्ट SMS. तो ये हम टेस्ट SMS यहाँ पे देंगे.
लेकिन जैसे कि आपको पता है कि टेस्ट एसएमएस यहाँ पे जो होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो उसको एक्चुअली एरे में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा, दैट विल बी मेकिंग इट एन एरे। एंड देन ये जो भी मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा उसको हम टू एरे में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट विल बी गेटिंग द टू एरे। सो एग्जैक्ट सेम प्रोसेस जो यहाँ पे हमने की है ना, इफ यू सी एट द बिगिनिंग, जो भी प्रोसेस यहाँ पे हमने अप्लाई करी है एट द बिगिनिंग, सो एग्जैक्ट सेम प्रोसेस विल बी डीलिंग हियर ऑल्सो। तो जो भी प्रोसेस यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमने की है, सो लेट मी शो यू हियर, यहाँ पे दिस लाइन। तो यहाँ पे क्या था ना, लाइन नंबर 28 पे, कि फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन यूज किया है काउंट वेक्टराइजर का, और एसएमएस क्या है, फिट ट्रांसफॉर्म तब यूज किया जाता है, फिट भी करो और ट्रांसफॉर्म भी करो। फिट मतलब ट्रेन करो, तो ये जो सीवी है काउंट वेक्टराइजर, दैट विल बी ट्रेन ऑन दिस एसएमएस डेटा। नाउ एसएमएस डेटा क्या है, अपना पूरा डेटा सेट है, और उसको ट्रांसफॉर्म भी करो, तो ट्रांसफॉर्म करके एक्स में कन्वर्ट करो। तो इस लाइन पे एक्चुअली दो काम हो रहे हैं, एक तो फिटिंग भी हो रहा है, ट्रेनिंग भी हो रहा है, और ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है, एंड दैट विल बी एक्स। लेकिन अभी हमें फिट करने की जरूरत है नहीं, हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओनली ट्रांसफॉर्म करेंगे। और टेक्स्ट एसएमएस को हमें स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों डालना पड़ा, क्योंकि अपना जो एसएमएस है दैट इज स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ पे उसको एरे चाहिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो उसको एरे में कन्वर्ट किया, या फिर उसको इन द फॉर्म ऑफ दिस एरे ले लिया, एंड आफ्टर दैट टू एरे। ओके, नाउ फाइनली विल बी गेटिंग दिस टेस्ट एसएमएस ओवर हियर, एंड दैट विल बी आवर फाइनल, दिस विल बी अ न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको चाहिए तो हम यहाँ पे इसको भी प्रिंट करेंगे, एंड दिस इज द बैग ऑफ वर्ड। ओके, ये जो हमें मिलेगा ये क्या होगा, बैग ऑफ वर्ड। तो पहले हम यहाँ पे एसएमएस टाइप करेंगे, फिर एसएमएस का हम एनएलपी करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे उसका, पंक्चुएशंस एंड ऑल एवरीथिंग विल बी रिमूव्ड, एंड देन वी विल बी गेटिंग बैग ऑफ वर्ड। और जैसे हमें बैग ऑफ वर्ड में यहाँ पे मिलेंगे, नाउ वी आर रेडी टू परफॉर्म द प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन करने के लिए रिजल्ट इक्वल टू दिस, अपना क्या था, एसएमएस था ना, एसएमएस और द स्पैम मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। और क्या प्रेडिक्ट करेंगे, ये टेक्स्ट एसएमएस को, टेस्ट अंडरस्कोर एसएमएस को प्रिडिक्शन करेंगे। और अगर हमें चाहिए तो हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, सो प्रिंट रिजल्ट इक्वल्स टू कॉमा दिस रिजल्ट। ओके, नाउ विल बी गेटिंग द रिजल्ट। तो चलो शुरू से एक बार फिर से शुरू करेंगे सारे स्टेप्स, और यहाँ पे रन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। नाउ इट्स रनिंग, विल वेट फॉर सम टाइम टू, सो दैट इट विल आस्क टू एंटर सम एसएमएस। तो हम वहाँ पे कुछ एसएमएस टाइप करेंगे, and we'll check whether it is the spam SMS or the harm SMS. So it'll take it time because it has to perform 5000 something. So again, it has no type SMS. So here we'll type some SMS. So let's say, hi, how are you? Something or question mark. Now this is my SMS. Let's say. Now this is see. Finally वो SMS क्या बन गया देखा यहाँ पे, hi you. Okay. तो ये R and the other stuff is removed. So this is the how this is how the lemmatization plus this thing is going to work. Stop word removal is going to be do, and this is how it has also removed the punctuation marks also. तो ये अपना ओरिजिनल एसएमएस था, राइट? और उसके बाद ये ओरिजिनल एसएमएस जो भी है हमारा वो बन चुका है हाई यू ओनली। तो उसमें से पंक्चुएशंस हटा दिए हैं, स्टॉप वर्ड्स हटा दिए हैं, एंड प्लस अगर कुछ यहाँ पे और कुछ था तो वो भी यहाँ पे, मतलब अगर यहाँ पे कुछ लेमेटाइजेशन करने जैसे कुछ है तो उसको भी हटा दिया है। और फाइनली ये जो है, दिस इज बैग ऑफ वर्ड, किसके लिए, इसके लिए, ये जो मैसेज हमने यहाँ पे टाइप किया है इसका ये बैग ऑफ वर्ड है ये पूरा। एंड इसका रिजल्ट क्या आया, जीरो। जीरो मतलब क्या होगा अपना, नॉट स्पैम। अगर वन आता
तो दैट विल बी अ स्पैम एसएमएस। तो अगर कोई एसएमएस 1 आता तो दैट विल बी अ स्पैम एसएमएस। तो हम क्या करेंगे कि स्पैम चेक करने के लिए हम डेटाबेस में से ही एक एसएमएस तो लेंगे। तो ये अपना डेटाबेस है। तो डेटाबेस में लेट्स से दिस इज दिस स्पैम वाला एसएमएस है ये। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ पूरा और इसको मैं एंट्री करूँगा जब भी मुझे वहाँ पे एंटर करना होगा ना। तो फिर से मैं इसको रन करूँगा and now it will be again asking me after some time for the SMS. So in that case I will be entering that spam wala SMS. Okay, now यहाँ पे I will be printing that spam wala SMS and hit enter. So now you see here the result is 1. Result is 1, that means it is the spam. Okay, so likewise you can even put some spam SMS content over there. And यहाँ पे इसने real time data भाई ये जो था this was not there in the database, तो ये completely new है, but still it has correctly identified it as the not spam. But this SMS which is the spam one, database में भी spam है, लेकिन अगर कोई भी spam SMS आप आपके मोबाइल फ़ोन में से भी डाल के यहाँ पे दोगे तो 98% चांस है, क्योंकि इसका एक्यूरेसी 98% है, तो 98% चांसेस है कि वो अगर स्पैम एसएमएस है तो उसको स्पैम करके क्लासिफाई किया जाएगा, और अगर वो नॉट स्पैम है तो उसको नॉट स्पैम करके क्लासिफाई किया जाएगा। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट सेशन। तो लेट्स रिवाइज द things that we have done from the beginning. So the step number 1 was loading the libraries which are required. तो यहाँ पे NLT के stop words का libraries, lemmatization का library, pandas library, regular expression library to remove some punctuations, वो सारे यहाँ पे लगने वाले थे, तो हमने वो किया। फिर हमने लोड किया अपना डेटा सेट। एज द डेटा सेट वो स्टोर्ड इन द TXT फाइल, तो उसका सेपरेटर, मतलब नॉर्मली जो CSV फाइल होता है उसको कॉमा होता है हर एक स्ट्रिंग के बाद, तो यहाँ पे सेपरेटर हमने स्लैश टी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। एंड नेम्स हमने यूज़ करे यहाँ पे, क्योंकि ये CSV फाइल नहीं है तो इसको जो कॉलम्स है उनके टाइटल्स भी नहीं है, हेडर्स भी नहीं है, तो हमने असाइन किया उसको, एक को लेबल असाइन किया और एक को मैसेज असाइन किया, क्योंकि अपना जो डेटा सेट था उसके अंदर एक कॉलम लेबल था एंड अनदर कॉलम वाज जो SMS जो कुछ भी हमारा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको असाइनमेंट किया और जो भी था वो असाइन किया। एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट करके भी देखा कि क्या होगा। आफ्टर दैट लिमिटाइजर ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया एंड उसके बाद हमने SMS करके एक एम्प्टी लिस्ट बनाया एंड उसके अंदर फिर ये first of all we have removed the punctuations, then we have converted into small case, then in terms of some word list, and finally using lemmatization and removal of the stop words हमने यहाँ पे words मिले एंड फाइनली उन सबको ज्वाइन करके वी गॉट द सेंटेंसेस, और एक के बाद एक अपेंड करने के बाद इन द SMS वी विल बी गेटिंग the list of all the sentences or the SMS. So that will be a list. Okay, here it will be a list. Here it will be a string. यहाँ पे string होगा, और जो कि वो string को हमने इसके अंदर append किया तो that will be a list because यहाँ पे SMS एक list करके defined है। नो यहाँ पे हमें लिस्ट मिली, तो बैग ऑफ वर्ड हमें अभी इसके फाइंड आउट करने हैं। तो बैग ऑफ वर्ड फाइंड आउट करने के लिए वी आर यूजिंग द काउंट वेक्टराइजर। यूज एज एन असाइनमेंट यू ट्राई हियर for TF-IDF vectorizer. Instead of this count vectorizer, you go with TF-IDF vectorizer and let me know what is the accuracy you are getting. So that will be an assignment for you. तो यहाँ पे काउंट वेक्टराइजर यूज किया। मैक्सिमम फीचर दैट मींस मैक्सिमम वर्ड मैंने एज्यूम किया कि 2500। आप लास्ट प्रैक्टिकल में आई हैव कंसीडर 1500, यू कैन कंसीडर दैट आल्सो। क्या इसको चेंज करने से एक्यूरेसी पे कुछ इंपैक्ट होता है, दैट आल्सो यू वेरीफाई। और इसको चेंज करने से क्या होगा कि जो स्पीड है एल्गोरिदम का, अगर कम करोगे तो थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि फीचर्स कम हो जाएंगे, तो यू जस्ट डू दैट आल्सो। और आप ये भी कर सकते हो, यार इट इज 2500 नंबर ऑफ फीचर्स, दैट मीन्स 2500 नंबर ऑफ इनपुट कॉलम्स हमारे पास है। तो ये जो इनपुट कॉलम्स रिड्यूस करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, कैन यू आंसर इन द चैट। इसका डायमेंशन रिडक्शन करने के लिए इनपुट कॉलम्स के 2500 बहुत ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सी टेक्निक हमने सीखी है इन द प्रीवियस प्रैक्टिकल्स।
यू मे आंसर इन द चार्ट। डायमेंशन रिडक्शन करने के लिए क्या यूज किया था हमने? PCA, Principal Component Analysis. Okay, we have seen that thing. So Principal Component Analysis यूज करके ये पूरा जो डेटा है उसका अलग रिप्रेजेंटेशन मिलेगा हमें, and that will reduce the number of columns or number of features, but at the cost of accuracy. जब हम PCA यूज करेंगे तो थोड़ा accuracy में कम हो सकती है, लेकिन we need to wisely use that. If the accuracy is getting very low, in that case the PCA is not useful, but PCA will definitely reduce the number of columns and will speed up the machine learning process, but at the cost of accuracy. So something you will have to pay for reduction and saving the time, but of course if the accuracy is not up to the mark, then we will not go for the PCA. फिर इसको हमने ये फिर cv डॉट फिट ट्रांसफॉर्म करके एसएमएस को विल बी कन्वर्टिंग इन टर्म्स ऑफ सम bag of words. So now x will be the bag of word and you can print this one, and this is done for the independent variables or the predictors or the features. But what about dependent variable or the target or the output variable? For that purpose we'll be converting into dummies, and the label column will be using, that will be spam and ham, and it's only one column as we have seen here, and that will be used as a target variable. नाउ यहाँ तक जब हम आएंगे, इसके आगे का प्रोसेस अपना सिंपल है, जो हमने प्रीवियसली किया वही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे, एंड यहाँ पे उसको स्प्लिटिंग करेंगे, 20% स्प्लिटिंग, यू गो विथ 30% स्प्लिटिंग, 25% स्प्लिटिंग, एंड वेदर इट इम्पैक्ट्स ऑन द एक्यूरेसी यू कैन चेक, यू कैन डू सच एक्सपेरिमेंटेशन। अगर मैं यहाँ पे 20% स्प्लिटिंग है तो 25% करूंगा तो क्या एक्यूरेसी पे क्या इम्पैक्ट होगा? 25 करने के लिए 0.25 करना होगा। एंड द ट्रेनिंग द नेव बेस क्लासिफायर और द मॉडल। तो यहाँ पे मैंने नेव बेस क्लासिफायर यूज किया है। यू गो विद द केन इन क्लासिफायर, यू गो विद एसवीएम, यू गो विद एनी अदर क्लासिफायर, रैंडम फॉरवर्ड, डिसीजन ट्री, जितने भी क्लासिफायर हमने पढ़े सारे क्लासिफायर को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करो, और बाद में आपको अलग अलग एक्यूरेसी मिलेगी। सो दैट विल बी अगेन द असाइनमेंट्स फॉर यू। यू ट्राई दिस प्रोजेक्ट विथ मल्टीपल क्लासिफायर्स। तो फाइनली यहाँ पे जो भी एसएमएस है उसका स्पैम मॉडल क्रिएट हो जाएगा, और उसका परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए विल बी यूजिंग दिस एक्यूरेसी मेजर्स, सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड एक्यूरेसी स्कोर। तो इससे हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी हमें मिलेंगी, एंड दैट इज गॉट इम्प्रेसिव रिजल्ट वी आर गेटिंग ओवर हियर। एंड एट द एंड रियल वर्ल्ड डेटा पे टेस्टिंग करना इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फाइनल, दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, कि हमारा मॉडल जनरेट हुआ, उसका ये सब कुछ हुआ, दैट्स फाइन, बट हमें चाहिए रियल टाइम डेटा पे अगर मैं कुछ भी एसएमएस उसको इनपुट करूंगा तो वो स्पैम है या नहीं, उसके लिए अपना मॉडल रेडी होना चाहिए। डेटाबेस में से करेगा तो दैट्स नॉट द बिग डील, ऑलरेडी देयर इज इन डेटाबेस, तो आप सिंपल सर्च ऑपरेशन करोगे तो भी होगा। मशीन लर्निंग मतलब जो उस पे जो भी ट्रेन हो चुका है, नाउ दैट मस्ट बी एबल टू ऑपरेट ऑन रियल वर्ल्ड डेटा, अननोन डेटा। तो वो करने के लिए हम यूजर से बोलेंगे कि आप आपका एसएमएस यहाँ पे टाइप करो, और जो यूज़र यहाँ पे एसएमएस टाइप करेगा तो फिर हम उस एसएमएस को वही सब कुछ करेंगे, उसका पंक्चुएशन हटाएंगे, लोअर स्प्लिटिंग करेंगे, लेमेटाइज करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, और उसको यहाँ पे प्रिंट भी करेंगे। हमने यहाँ पे प्रिंट करके देखा है डिबगिंग के लिए कि ओरिजिनल हमारा एसएमएस किस तरह से था, हमने एसएमएस देने के बाद उसका क्या हो चुका, उसमें से कौन से वर्ड्स हटा दिए, दैट थिंग, एंड देन फाइनली उसको प्रिंट करवाएंगे, एंड एट द एंड उसको फिर से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे बैग ऑफ वर्ड्स के फॉर्म में। दिस विल बी आवर बैग ऑफ वर्ड्स, एंड द स्पैम मॉडल will predict this SMS now, and if the result is 0, that means it is harm SMS or not spam, and if the result is 1, that means it is spam. आगे चल के एक और चीज आप यहाँ पे ऐड करो, if result of 0 is equals to 0, तो आप यहाँ पे प्रिंट करो नॉट स्पैम। ओके, तो ये हमें चाहिए, फाइनली ये चाहिए हमें, एल्स प्रिंट स्पैम। ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, कि स्पैम एसएमएस है या नॉट स्पैम एसएमएस, तो ये आउटपुट इस तरह से प्रिंट होना चाहिए। सो अगेन विल रन दिस टू टेस्ट इट आउट कि क्या है ये सारा फंडा।
और हम यहाँ पे मॉडल को ट्रेन होने की वेट करेंगे, एंड वंस द मॉडल इज ट्रेन्ड वी विल बी एंटरिंग आवर एसएमएस ओवर हियर। तो हम उसको चेक करेंगे कि वो स्पैम है या नॉट स्पैम है। Okay, so now it is asking for the SMS. So again, we'll be putting the same SMS. Hi, I think I'm typing here. Hi, how are you? Question mark. Not spam. Okay, what we got? Not spam. So this is what we are expecting. So in this way, you will have to complete your project. Okay, and as I said, you will have to do it for multiple number of classifiers, and of course for the TF IDF vectorizer. So for both the things you will have to do this thing, and accordingly I will be testing your project. तो ये हमारा प्रोजेक्ट इस तरह से होंगे। लास्ट टाइम भी हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए एंड उसको हमने इस तरह से टेस्ट भी किया है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, जब हम वेब डेवलपमेंट का मॉड्यूल सीखेंगे, वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, तो हम इसके लिए एक प्रॉपर वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। उस वेब एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा, जैसे कि एक वेबसाइट होती है तो वहाँ पे एसएमएस टाइप करने के लिए हमें फील्ड मिलेगा जिसमें हम टाइप करेंगे एसएमएस। जैसे हम एसएमएस भेजते हैं ना टाइप करके, तो उस तरह से विल बी गेटिंग सम फील्ड, और उसके नीचे एक बटन होगा कि ये प्रेडिक्ट करो, ये एसएमएस टाइप किया है मैंने, इसको प्रेडिक्ट करो। तो प्रेडिक्ट बटन को क्लिक करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा कि क्या है। तो एक इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस हम डिजाइन करेंगे वंस वी स्टडी द वेब डेवलपमेंट मॉड्यूल। तो जब हम वेब डेवलपमेंट मॉड्यूल सीखेंगे जिसके अंदर हम फ्लास्क फ्रेमवर्क सीखने वाले, so in that we'll be creating a web application for this. Okay, but for now that's the end for today's session. So before we conclude the session, you can put your queries and doubts in the chat.